Yes, we are live. Hello everyone. It's indeed hello everyone. It's indeed inspiring to see you back again. Welcome back to Data Fest. Data Fest is the celebration of our 8th Foundation Day. So under Data Fest, we have organized various events, competitions, and guest lectures. So I welcome you all to this particular session. Today we have a guest lecture on how to start a startup. So let me share a little bit about today's session and presenter. So today we have a session on how to start a startup, and the session will be delivered by Chaitanya Nimodiya Sir. He is a founder and proprietor at Nimodiya and Company. He has more than 9 years of experience in the field of accounting and consultancy firms. He is alumnus of RVG Educational Foundation, largest chartered accountant network of India. So let me welcome Chaitanya sir to deliver the session and request him to start with the session. Thank you, Suyog, for the introduction. Thank you, Indeed team, for. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yeah. Thank you, Suyog, for the introduction. Thank you, Indeed team, for inviting me to deliver a session on how to start a startup legally explained. So, as introduced by Suyog, myself, C. Chaitanya Nimodiya. I'm working in the field of chartered accountancy for last 11 years. Earlier, prior to starting on my own, I was working with KPMG and other largest organization of India. And post that, I have started my own startup to help the other startups to succeed. So I think we should start with how to start a startup legally explained. Okay, so the first question. My screen is visible. Yes, sir, it is visible. Yeah. So in today's session, we will be covering the following topics: which legal entity should be selected, for starting a startup. Then the comparison between the various types of legal entities, and what are the mandatory compliances for all the legal entities, irrespective of the legal entity which we have selected. Okay. So before deciding which legal entity should be selected, we should know what legal entities are available in India. So these are all the legal entities which is available in India. The first one is the sole proprietorship. The second one is the partnership firm. The third one is the limited liability partnership. Fourth one is the one-person company, and fifth one is a private limited company. Okay. So apart from this, there is also one public limited company, but this is the large organization which you must be seeing on the stock market or something. All those entities are the public limited companies. So in the startup scenario, this public limited company does not fall. Okay, so this is a very important question before starting any startup. Which legal entity should be selected? Whether it should be a sole proprietorship, partnership firm, LLP, OPC, or a private limited company. Most of your legal decisions in the future will depend on which entity we have selected. Okay, so we will go one by one in the comparison chart. What are the benefits, pros, and cons of each entity, and based on that, we can select a decide our legal entity. So on this left column, you will see various parameters on which we are comparing the various legal entities. So OPC, private limited company, LLP, sole proprietorship, and partnership firm. So in term, so first parameter we are comparing is on the legality. Okay, so what is legality? So legality is the legal identification of any constitution or your business. So in case of OPC, private limited company, LLP, all these three types of legal entity is a separate are having a separate legal identity in the meaning of law. That means they can buy, sell, purchase anything in its own name. They can even own the land or anything in their own name. In case of sole proprietorship, the identity of the sole proprietorship is the identity of the owner of that company. So this is mainly driven by a sole proprietor, where there is a single business owner. There is no multiple owners. There is no partnership. There is no investors. Then this sole proprietorship comes into the picture. And partnership firm is a form of LLP only. This LLP legal entity introduced in India is around 2008 or 9. Earlier, there was only a partnership firm, where partnership firm is not having any separate legal entity. It is a pure
just a partnership firm which can be registered with the register of firms, or it cannot be registered with the register of firms, but it does not have any legal identification. So based on these legal entities, Parliament has passed various laws on which this can be governed. So OPC, private limited company, both are governed by the Companies Act 2013. LLP is governed by the Limited Liability Partnership Act 2008, and partnership firm is governed by the Indian Partnership Act 1932. There is no law which is governing the sole proprietorship. Okay. So next question arises is how to register, or where these registrations happen. So in regard this, the OPC, private limited company, and LLP, all these have to be registered with the Registrar of Company, which comes under the Ministry of Corporate Affairs of Government of India. There is no specific registration required for the sole proprietorship firm, and partnership firm can be registered, cannot be registered. If the partnership firm is registered, then any dispute in the partners or something can be taken to the court. But if the partnership firm is not registered, then it cannot. There is no legal options available with any of the partners. And if it has to be registered, it has to be registered with the registrar of firms. Sorry. So registrar of the firms is each state is having its own registrar of firms. It does not come under the central government. Okay. So we will move to the next parameters of comparison. Then coming to the name. So when there is a OPC, every company will have one person company in its name. Suppose we are having Agile Ventures, and we have to register it as a OPC. So name of the Agile Ventures will be Agile Ventures one person company. When we register it as a private limited company, it will be Agile Ventures Private Limited company. Private limited, sorry, not company, Agile Ventures Private Limited. When we register it as an LLP, it will be then Agile Ventures LLP. There is no guidelines for the sole proprietorship firm. There is no guidelines for the partnership firm. Then coming back to the capital contribution, minimum authorized and paid up capital for OPC and private limited is 1 lakh rupees. However, government for ease of doing the business, this limit has now been reduced, and it can be registered with the minimal amount of capital also. There is no limit prescribed for LLP, sole proprietorship, and partnership firm again. So minimum number of directors or partners. So for registering one person company, one director who has to be a resident of India. For private limited company, there should be at least 2 directors. Out of that, one should be from the resident of India, one can be a foreign director. So there can be more than 2 directors, but mandatory one should be resident of India. For registering the company, 2 partners should be there. At least one director, one partner should be from India. There can be again more than 2 partners, but one should be from the India. Again, sole proprietorship, the owner is having his own identity. There is no guidelines for the minimum number. And partnership firm, at least 2 partners should be there. Okay. So coming to the next comparison points, minimum number of shareholders or the members. One person company, as the name denotes, there should be only one shareholder. What is shareholder? If all of you will having, if not from the finance background or legal background, you might be having a question: what is a shareholder? Shareholder is a owner of the company. You can say that, who is having a share in the ownership of the entity. So as the name suggests, for the OPC, there is there can be only one owner of the company. So hence the name is the one person company. So there should be only one shareholder who has to be a resident of the India. He has to appoint a nominee in case of the death or the incapacity. If he should appoint his nominee in case of any events. In case of a private limited company, again there should be at least two shareholders. One of them the shareholder can be another company also. In case of LLP, there is partners, so it is not applicable. Shareholdership is not applicable. Again, sole proprietorship, partnership firm, this parameter is not applicable. So this is the case of the board meeting. How much meetings should be conducted in OPC? How much meetings should be conducted by private limited, LLP? So directors who is appointed as a director of this private limited company or OPC, the law has prescribed that at least there should be 4 board meetings in each year and everything. So these are the legality of the Companies Act 2013.
Okay, then regarding the annual filings. So what are the annual compliances which is mandatory for OPC with respect to register of company? So financial statements and annual return to be filed with the ROC. So what is financial statement? Your financial statements comes with the profit and loss account, your balance sheet, and notes to annexure to those statements. Again, in private limited also and in LLP also, this too has to be submitted with the register of company. There is no such requirement for sole proprietorship and again with partnership. Okay. So with respect to then audit. So for OPC private limited company, audit is compulsory, irrespective of their share capital or turnover or anything. So for LLP, when there is a capital contribution, what is capital contribution again? So capital contribution is the amount you have invested to start your business. So if it is more than 25 lakh rupees, then you audit is compulsory. Or if your annual turnover, so what is turnover? The sales which you are making. It is if it is more than 40 lakhs or the annual the capital contribution is more than 25 lakhs, then audit is applicable to the LLP. Otherwise, audit is not applicable. Only filing of the statement is required. So in proprietorship, again, or audit is not compulsory. In partnership firm, audit is compulsory, and this is to be filed with the register of firms. Then coming back to the foreign nationals, as we go as a startup, a lot of times we come across the foreign investors. So we should check whether while taking the decision regarding the legal entity, whether we should decide whether foreign investor will be allowed in the OPC, private limited, LLP, sole proprietorship or partnership. So regarding the OPC, again, no foreign nationals is allowed. In private limited, foreign national can be a shareholder. However, there is a RBI reporting for that, which is just a compliance point of view. However, this is allowed. If you might have also heard about the FDI, foreign direct investment. So this is nothing but the FDI. Again, in LLP, foreign nationals can be a partner. Again, RBI reporting is required. In partnership firm and sole proprietorship, again, foreign shareholding or foreign ownership not allowed. Coming back to the taxation. So this is one of the most important thing while taking the decision of the legal entity. So how if my business earns 1 lakh rupees as a profit, how I will be charged as a tax in different scenarios. Whether if I am a OPC, how much tax I will have to pay. If I am a private limited company, how much tax I will have to pay. If I am a LLP, how much tax I will have to pay. If I am a sole proprietorship or a partnership firm, how much tax I will have to pay. It all depends on the tax income tax act and the tax rate for different legal entities. So in case of the OPC, the income tax is around 25%. Again, in case of privately limited, this 30% is now changed to the 25%. Okay, in case of LLP, 30% is still there. In case of sole proprietorship, it goes to the slab rate of the individual. Based on if a owner of the business is having any other income, suppose someone is having salary plus a business and he is a sole proprietorship, then based on the tax slab, he or she will be taxed 20%, 30% based on his total income. And in partnership firms, straight away 30% is charged. Surcharge will depend on the profit you earn. Then coming back to the liability of various legal. So what is a liability? Liability is something which you have to pay to someone. In case of OPC, private limited company, LLP, this is a limited liability entities. Sole proprietorship and partnership firm are unlimited liabilities. So what does it mean? Limited liability and unlimited liability. Suppose in case you start a business with taking some loan from a bank or something, and eventually if your business fails and you are not able to repay that loan taken from the bank to the bank. So if you have a OPC, private limited company or LLP, your loan your personal asset will not be hampered. All you will have, you can will be hampered is something which you have given as a mortgage or the assets which your company is owning, not your personal assets. So OPC, private limited, LLP is having that benefit. It is a limited liability thing. Hence, LLP, everything as a last time as a limited. Okay, in sole proprietorship and partnership firm, you don't have the leeway of a limited liability.
So if someone starts the business by taking loan as a proprietorship and he is not able to pay, then bank can sell his house also. So this is the differentiating factor between limited liability things. Then conversion. So what is conversion? If today I start with the OPC, but as my business grow, I think I should go to the private limited or LLP based on as my business is growing. If I so this conversion is sorry. Sir, I have a question. हेलो. हाँ सर, क्या आप फिर से एक बार सोलो और पार्टनरशिप फर्म थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हैं? कौन सा? सोलो और पार्टनरशिप फर्म. Sole proprietorship or partnership firm. Okay. Regarding this liability, Just general overview. so sole proprietorship is purely your own business which you are doing. All the registration, everything is in your own name and not in the name of the company or something. So this is the sole proprietorship. And partnership firm is you suppose you and your friends start a business. So and it is you registered it as a partnership firm, so it becomes a partnership firm. And LLP is also partnership firm, but it is having a limited liability partnership firm. However, only partnership, when you registered it as only partnership firm, its liability is not limited. ओके सर, ओके. Understood? और सर सोलो Sole proprietorship. हाँ. हाँ, सोलो उसमें हम इंडिविजुअली काम करते हैं तो वो सोलो के अंदर आता है क्या? हाँ, आप इंडिविजुअली काम करते हो, कहीं रजिस्ट्रेशन है या कुछ नहीं दिया है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है. जैसे कि फ्रीलांसर होता है तो वो सोलो Yes, में yes, yes. Correct, correct. When someone is working as a freelancer without taking any registration, then it is a free sole proprietor. और सर मैंने सुना था कि जो हाई स्किल इंडिविजुअल होते हैं फ्रीलांसर, वो क्या करते हैं टैक्स बचाने के लिए दुबई में उनकी फर्म खोलते हैं और वहां पे वो क्रेडिट करते हैं अमाउंट. तो वो क्या कंसेप्ट है सर? वो उन्होंने ओपीसी ओपन की है या मतलब सोलो कैसे है सर? नहीं, तो उन्होंने so that might be the case कि उन्होंने ये जो लीगल एंटिटीज है, ये इंडिया के लीगल एंटिटीज है. उन्होंने जो दुबई की लीगल एंटिटी है, वहां पे दुबई में बैठ के उन्होंने दुबई की लीगल एंटिटी ओपन की और वहां से वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. तब वो इंडिया से काम करते हैं सर, और दुबई में उन्होंने बैंक अकाउंट या जो भी है सर मुझे पता हाँ, नहीं है. उन्होंने दैट माइट बी द केस कि उन्होंने वो काम इंडिया से कर रहे हो, बट उनका जो इनवॉइसिंग और सब चीजें है, जैसे उनकी कस्टमर का पेमेंट वगैरह है, वो सब दुबई के अकाउंट में आ रहा है. हाँ, तो तो वो सर इंडिविजुअली आ रहे हैं या ओपीसी के अंडर आ रहे हैं या नहीं, मतलब तो कैसे? ये ओपीसी जो है वो इंडिया का कंसेप्ट है, ये दुबई का कंसेप्ट नहीं है. वहां पे अलग अलग जो लीगल एंटिटीज है, जैसे वहां का जो प्राइवेट, उन्होंने वहां का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन किया होगा या वहां पे उन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप एज रजिस्टर्ड किया होगा और वो वहां पे ले रहे होंगे पैसा. अच्छा सर, और फिर इंडिया में सर उस पे टैक्स नहीं लगता क्या? जस्ट मैं देख रहा था मतलब ऐसा तो. नहीं, तो इट डिपेंड्स कि वो जो बंदा है जिसने वो रजिस्टर्ड किया है, वो इंडिया में रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, वो उसकी इंडिविजुअल लेवल पे टैक्सेशन आता है. वो यूएस बेस और यूरोपियन क्लाइंट के लिए काम कर रहा था सर, सोलली प्रोजेक्ट के ऊपर. नहीं, वो कौन से क्लाइंट पे काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा. वो डिपेंड अच्छा. रहेगा कि वो बंदा आपका इंडिया का रेसिडेंट है या बाहर का रेसिडेंट है. उसके अंदर भी काफी सारे कंडीशंस है कि वो इंडिया में कितने दिन रहा है, वो बाहर कितने दिन रहा है, वो इंडिया में कब आया है. उसके बेसिस पे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है. उसके बेसिस पे उसका तो इस सब को अपन जो बोलते हैं वो टैक्स प्लानिंग बोलते हैं. जो टैक्स अच्छा. प्लानिंग कर एक होता है टैक्स इवेजन और एक होता है टैक्स प्लानिंग. ये सब चीज जो करना है वो होता है टैक्स प्लानिंग. तो ये टैक्स प्लानिंग के अंदर आप ये सब चीज कर सकते हैं. ओके सर, ओके. ठीक है. यस सर. ओके, सो अब कन्वर्जन हो गया. तो आपका ओपीसी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. देन आपका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और एलएलपी कन्वर्ट कर सकते हो. एलएलपी भी आप पब्लिक कन्वर्ट कर सकते हो. सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आप इंडिविजुअल ओनर थे.
तो वो चीज आपको एप्लीकेबल नहीं रहेगी। और प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी आते हैं वो डिसोल्यूशन पे। तो व्हाट इज डिसोल्यूशन? तो डिसोल्यूशन इज if you start to shut down your business, so how easy it is to decide to shut it down. So in case of OPC, there is no specific guidance is provided whether how to shut it down, but generally it have तो प्राइवेट लिमिटेड का जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर से आपका ओपीसी भी शट डाउन हो सकता है, ठीक है। अब प्राइवेट लिमिटेड शट डाउन करने के लिए देयर इज अ लेंथी प्रोसेस, यू हैव टू अप्लाई टू द आरओसी एंड एवरीथिंग हैज टू बी डन, देन यू हैव टू अपॉइंट अ लिक्विडेटर and based on that you have to go to the NCLT, that is National Company Law Tribunal, और वहां से ऑर्डर पास करके आपको प्राइवेट लिमिटेड बंद कर सकते हैं, ठीक है। एलएलपी के केस के अंदर आपका काफी इजी प्रोसेस है। एलएलपी क्लोज करने के लिए आपको कुछ एप्लीकेशंस करने हैं गवर्नमेंट को, उसके बेसिस पे आपका एलएलपी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अगेन नॉट एप्लीकेबल है। सोल प्रोप्राइटरशिप तभी बंद होगा जब जो उसका ओनर है वो भगवान को प्यारा होगा, ठीक है। और पार्टनरशिप के अंदर आपका पार्टनरशिप के जितने भी पार्टनर्स है इन सब का एग्रीमेंट एक बना के आप वो डिसॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट या किसी को कोई क्वेश्चन? आई हैव अ डाउट सर। हाँ बोलिए ना सर। वो जो लोग स्टार्टअप चालू करते हैं सर, और हाँ उनकी इंडिविजुअल वेल्थ भी बहुत ज्यादा रहती है सर, पर जब स्टार्टअप फेल होता है तो वो बैंक की तरफ से डिक्लेयर कर देते हैं, पर उनकी इंडिविजुअल वेल्थ तो बहुत सारी रहती है, तो वो वहां से पैसे नहीं देते सर। तो ये कौन सा कंसेप्ट है सर? ये है वही जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, व्हिच इज लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट। जो स्टार्टअप उनका जो कंपनी फेल होता है तो उनका लिमिटेड लायबिलिटी में कंपनी फेल होता है, उनके जो पर्सनल असेट है उसको हाथ नहीं लगता है, हाँ अच्छा सर, अच्छा ठीक है। ओके, यस सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? So, good afternoon, sir. Apeksha this. या Sir, है according to you, which is the perfect one to start a startup according? सो अकॉर्डिंग टू I am a student sir, right now, and I am a girl basically. So there is a issue of finance, right? So which can one you please would repeat be a the better? question? Sorry, I missed your last sentence. Sir, what would be a good choice for me to start with something new? Okay. So, see, Apeksha, what business? It all depends on what business you are starting, and we should compare all these parameters before starting anything. So, according to me, if you are going to take some investors with you, then at all time private limited is a good company. But you are not going to take any investors with you. You will be doing business on your own for some time, and then so to start with the sole proprietorship is good if to start with only because solo proprietorship will not have much compliance cost or something. All other will have OPC, private limited, LLP, partnership firm have audit and everything will be applicable. So at least 20 to 25,000 minimum per annum expense will be there to run this OPC, private limited or LLP. Even if you don't do any kind of transaction in your company. Okay, sir. Thank you. Okay. Any other question? No, sir. Shall we move ahead? Okay. Yes, sir. So these all are the parameters on which we are comparing the legal entities. Okay. Then we have the mandatory compliances for all the irrespective of what legal entities you decide. These are the 4 things you must do in your business. First is the accounting. Accounting is very basic recording of all the transactions you are doing in your business, whether it is a single rupee of purchase or single rupee of expense or single rupee of revenue. Everything must be accounted. So this is the accounting part, and this gives a very good insight of your business, how your business is going, if the proper accounting is been done. Okay, then second is the GST. So GST is something which if you are providing, if you are into the service business, then when it attracts at 20 lakhs. If you are into the goods business, then it is at 40 lakhs. So based on that, GST gets applicable, and if the GST is applicable,
then you have to comply with the various GST returns and everything. Then income tax return is something which is mandatory in respect of whether you are doing business or whatever you are doing. So even if you are employed with someone and you are earning as a salary, then also the income tax is applicable. Then again, TDS is a total tax related tax, so you also call it as a withholding taxes. This is something which when you pay to your vendors or your employees, at that time you have a certain amount you have to withhold as a taxes and you have to deposit with the government, so that it comes under the TDS. And apart from this, other statutory requirement becomes applicable as per the size of the organization. So as and when as the organization grows, as the turnover grows, other compliances gets applicable, like your income tax audit, GST audit, and everything. Okay. So we are open for the questions. So this is how the comparison of various legal entities. So we can open up the question answer session for the YouTube audience. Okay. Anyone from the audience can ask the question regarding starting startup or business, any legal side question, because all of us as a technical persons, we have ideas on startup, right? We all want to start a business, but we do not have any idea regarding legalities. So anyone from audience have any question regarding legal aspects of a startup or a business can ask their question. Yes. Sir, I have been thinking a lot of about startup from the last 1.5 year, but I have a question that कि पहले इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब कहाँ से शुरू करें, या मैं खुद जॉब कर लूं या फिर फंड रेस करना पड़ेगा? तो So again it depends कि आपका बिजनेस आइडिया क्या चीज का है, और उसको इनिशियली अगर आप कुछ आप बता पाओगे आपके आइडिया के बारे में, कुछ जो आप सोच रहे हो, जिस चीज का बिजनेस करना चाहते हो, योर कंफर्टेबल। सर डिजिटल सर्विस प्रोवाइडिंग, हेलो हाँ बोलिए सर, वो डिजिटल एजेंसी रहती है ना, डिजिटल मार्केटिंग। हाँ डिजिटल मार्केटिंग, और थोड़ा आईटी की तरफ। ओके ओके, सो आपका ये जो बिजनेस है इसके अंदर जैसे जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि इसके अंदर इसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं रहेगी, आपका नॉलेज यहाँ पे आपकी असेट रहेगा, तो आप इसको मिनिमम अमाउंट के अंदर चालू कर सकते हैं। हाँ यस सर, बट मतलब बंदे हायर करने के लिए तो चाहिए होगा ना सर कैपिटल। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक क्लाइंट दो क्लाइंट आप अपने आप पे सर्व कीजिए, आप खुद सर्विस दीजिए, आपके 2-3 क्लाइंट्स को आप सर्विस दीजिए, वहां से आपका रेवेन्यू स्टार्ट कीजिए, और उसी रेवेन्यू से फिर आप थोड़ा थोड़ा एक्सपांड कीजिए, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। और सर मुझे सवाल ये भी आता है मन में कि डायरेक्टली स्टार्टअप के बारे में सोचूं और उसको 100% दूं, या साथ में जॉब करूं और फिर बाद में पार्ट टाइम स्टार्टअप पे फोकस करूं। तो आपके आप किस एरिया में, अगर आप किस एरिया में जॉब, अगर आपका वैसा है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी जॉब करोगे आप ऐसा जॉब कीजिए कि वो आपके बिजनेस के लिए हेल्प करेगा, आइदर आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करेगा, आपको वो कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करेगा। आप सिर्फ फंड कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जॉब मत कीजिए, आप कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में ही जॉब कीजिए, यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, वहां से क्या वहां और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वहां से आपके बाकी क्लाइंट्स के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे जो कि आप आपका बिजनेस के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। आप अगर जॉब करना चाहते हो तो उसी फील्ड में जॉब कीजिए जिस फील्ड में आप स्टार्ट करना चाहते हो आपका बिजनेस। ओके सर। Hi, sir. Apeksha here again. Yeah. So the thing is what? We should directly hop into starting a new startup, or we should help growing a startup with someone else. Like we should join a community to work on that startup. Which is the ideal idea according to you? So if you have a good idea in to start any business, you start with your confidence, who is
suppose means who is your business partner, you should start directly on your own if you have a good business idea instead of joining a startup community or something. Thank you, sir. Sir, can you please explain the term TDS again? So TDS is something, suppose TDS is the withholding taxes. It comes as the inner income tax. Suppose I am taking some services from X company, for which I my contract with X company is of 1 lakh rupees. Okay. So X, what will X company do? He will send me the bill of 1 lakh rupees for the payment. However, I will not pay him whole 1 lakh rupee. I will pay him 90,000 only, and 10,000 I will deposit to the government in the name of X company. This is the amount of X company which I am paying to the government, and then X company can claim it back from the government. Okay. Okay, anyone else? Questions? So I Okay, think from our Zoom audience, we should ask them what are the business ideas they are thinking of. So at least we Yes. can. So we'll start with. So you can ask any one by one. What is the business ideas they are looking at? Okay. Anyone wants to participate in this, share their business idea or want suggestions on their business idea? Hello, Anyone? sir. My name is Ankush. Yes. I have some business idea about stock price prediction broker. जो भी brokers रहते हैं ना, जो एक कंपनी के लिए मतलब खुद की कंपनी हम इन्वेंट करेंगे, जिससे हम स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन करके हमारे क्लाइंट्स को बता सके इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगी? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है अंकुश आपका. सो अंकुश, जैसे ये अभी तक मैंने जो आपको सब लीगैलिटीज बताए, ये काफी बेसिक लीगैलिटीज है जो हर काइंड कोई भी बिजनेस रहो ये मैंडेटरी है. अब जैसे आपने स्टॉक ब्रोकिंग रिलेटेड सवाल पूछा है, तो काफी सारे रेगुलेटर्स है इंडिया में. जैसे इंश्योरेंस के लिए IRDA है, बैंक्स के लिए RBI है, वैसे ही आपका ये जो है स्टॉक ब्रोकिंग वाला जो है उसके लिए है सेबी स्टॉक. तो आपको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एज अ स्टॉक ब्रोकर, और उसके बेसिस पे आप या फिर आप जो फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते हैं उसके साथ एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और उसके बाद में आप ये स्टॉक ब्रोकिंग ये एडवाइजिंग का सर्विस आपके क्लाइंट्स को दे सकते हैं. और इसके अंदर एक और चीज है कि आप किसी जो एग्जिस्टिंग बड़े ब्रोकर्स है उनका सब ब्रोकरशिप भी आप ले सकते हो. हाँ सर, यस. ओके सर, थैंक यू सर. ओके. Okay, yes. Anyone have any idea to present? Sir, I have one question. Yes, Akshay. Sir, if I want to raise fund, where we can मतलब फंड कहाँ पे रेज कर सकता हूँ, और ये वेंचर कैपिटलिस्ट कहाँ मिलते हैं सर, मतलब तो कुछ आइडिया नहीं सर, तो उसके बारे में बताइए ना थोड़ा. So venture capitalist. Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. I want to elaborate on that question. For example, we all have ideas regarding business, okay, but financing is one of the important parts of any startup. So, can you elaborate more on financing, such as seed funding, then round 1, round 2, Series A, Series B? Okay. So I will explain you the various concepts in that scenario. Good question, Prakash. So one is the bootstrap startup. So bootstrap startup ये होते हैं जिन्होंने किसी से भी कभी इन्वेस्टमेंट्स ली नहीं है, वो अपने दम पे ही अपने ही बिजनेस से पैसा कमा के ही अपना ग्रोथ कर रहे हैं. आपने जीरोदा का नाम सुना होगा, आपने जोहो का नाम सुना होगा, आपने फिजिक्स वाला नहीं है, जोहो और जीरोदा, ये दो स्टार्टअप आइडियल एग्जांपल है बूटस्ट्रैप के. इन्होंने कभी भी किसी से
फंडिंग नहीं ली है, इन्होंने अपने इंटरनल बिजनेस से पैसा जमा करके ही कंपनी की ग्रो की है। ठीक है। फिर दूसरा होता है सीड फंडिंग। सीड फंडिंग यह होता है कि आपका स्टार्टअप आप कर रहे हो बट कुछ मटेरियलाइज अभी नहीं हुआ है, आपका बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ फंड्स का रिक्वायरमेंट है, उसको बोलते हैं सीड फंडिंग। फिर उसके बाद में आपका होता है वेरियस राउंड्स, जैसे राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया। ये बिजनेस चालू होने के बाद में जैसे जैसे आपका वैल्यूएशन होता है, इन्वेस्टर के साथ में जो डिस्कशन होता है, उसके बेसिस पे फिर वो राउंड 1 राउंड 2 आगे बढ़ता है। सो ये हो गया वैल्यू। अब सेकंड थिंग था वेंचर कैपिटलिस्ट कहाँ मिलते हैं। देन तो वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया, ये सब एक इन्वेस्टमेंट बैंक्स रहती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं। इनके सर्विस लेने के बाद में एक कंपनी को पिच डेक बनाना होता है, काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ आवर स्टार्टअप। पिच डेक के अंदर क्या मार्केट है, अपन किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसका इंडस्ट्री का साइज कितना है, अपन कोई कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो अपन आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट होगा मार्केट में। ये सब चीजें अपन इन्वेस्टर्स को जब बताते हैं तो उसके बेसिस पे अपने को वो लोग इन्वेस्टमेंट्स देते हैं। Okay. Prakash, you have a question? सर वही क्वेश्चन था। Okay. Apeksha? No, sir. Cleared. Thank you. Okay, I think we have So one more thing, is there any forums or like communities which are helping out young people to get into startup or just explore their ideas? So if you are into engineering college or something, then most of the engineering colleges have set up their incubation centers. So in the incubation centers, you get a good guidance or mentorship for the startup. The COEP is having a Bhau Institute, and almost every engineering college in Pune is at least having the incubation centers. yes, and these incubation centers are not limited to their colleges Sorry? only. I was just adding more onto your answer that these incubation centers are not limited to only these colleges. They can allow other Yes, participants as well. Yes. And other social working platforms, they also have their incubation centers. You can just Google incubation centers in Pune or startup communities in Pune. You will find many communities and organizations, those who support startup as well. Okay, sir. Yes, sir. Thank you. I think सर we are done with yes. Okay. सर मैं जब भी मतलब दिमाग में कोई भी आइडिया आता है तब मैं उसके बारे में रिसर्च करने लगता हूँ गूगल पे या बुक्स पढ़ने लगता हूँ, जहाँ से जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है वहां से देखने लगता हूँ सर। पर क्या है ना, इंटरनेट पे और बुक्स में मतलब इंफॉर्मेशन बहुत कम रहती है। जो डेटा चाहिए मुझे मतलब निकालने के लिए, तो वो रहता नहीं है। तो वो डेटा कहाँ से मिल सकता है सर? अब ये डेटा डिपेंड करता हो आप मार्केट का डेटा देख रहे हो या कुछ टेक्निकल टर्म्स देख रहे हो। सो मार्केट का डेटा तो कहीं जगह पे पेड बेसिस पे अवेलेबल रहता है, बट टेक्निकल टर्म्स जो है ये आपको कहीं आपके प्रोफेसर या गाइड कर पाएंगे। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम में आप और जिसका सोल्यूशन आप चेक करना चाह रहे हो, बट मार्केट का डेटा काफी सारे साइट्स पे आपका पेड सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल रहता है, बट उसके सब्सक्रिप्शन कॉस्ट काफी ज्यादा होते हैं, तो वो हम लोग कभी सजेस्ट नहीं करते कि आप उसके ऊपर पीछे जाइए। जैसे कि आप एक आधा एग्जांपल दे पाओगे तो अपने आपको बेटर और ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सर मुझे मतलब मैं इंडिया का ग्राफ देख रहा था, मतलब सॉरी इंडिया का ग्राफ नहीं, इंडिया का वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये देख रहा था रिपोर्ट, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैंने देखा, फिर बाद में उसके बारे में रिसर्च करने के लिए मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, तो उसके बारे में कुछ मिल रहा नहीं था। जैसे कि हम तो चाइना से आप अब जैसे आप अगर कुछ सोच रहे हो कि आपको कोई एक प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है, आप गूगल कर सकते हो।
जहाँ पे पेड बेसिस पे उस प्रोडक्ट का कितना इंपोर्ट होता है, कितना एक्सपोर्ट होता है, पूरा डेटा आपको वो लोग फिर दे सकते हैं पेड बेसिस। तो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या सर, मतलब जैसे कि ये है वो आपको बता देंगे, या मतलब मैं नहीं, चेक इसके लिए आपको मैं मतलब किसी का नाम लेके कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये तो आप फिर मेरा नंबर लेके आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, बिकॉज वो किसी का एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। अब अच्छा हाँ, तो वो अब मैं आपको फिर गाइड कर पाऊंगा कि आप से बात करोगे तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा वगैरह वैसे मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। Okay, I think we are done with the questions, and we can conclude the session. On behalf of Indeed Inspiring Infotech, I would like to thank Chaitanya Nimodiya Sir for his valuable time and this valuable session. So I also would like to thank all the participants and participants on the Zoom and participants on the YouTube also. So these are the contact details of Chaitanya Sir. Those of you want to note of that, they can take note. So yes, we can conclude this session. I thank you all, and we can stop here. Thank Thank you you sir. everyone.